सो हाय गाइस। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबीएम मींस व्हाट इज डाल्विक वर्चुअल मशीन। इसको हम जीआईटी कंपाइलेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। इसके साथ ही काम करता है और इसी में हम अगला डिस्कस करेंगे एआरटी, एंड्रॉयड रन टाइम व्हाट इज। और इसके लिए ऐड ऑफ टाइम कंपाइलेशन यूज होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम डीवीएम के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था और फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप नॉलेज लाइक गैदर करके इकट्ठा करके फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एंड्रॉयड लाइक इंटरव्यूज में जब हम जाते हैं तो क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसके इंटरनल लाइक क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, अभी हम एंड्रॉयड में क्या यूज हो रहा है, लाइक डीवीएम यूज होता है या एआरटी यूज होता है। तो इस पे हमने लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो उसके ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। जैसे कि अगर मेरा ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबीएम एंड एआरटी, व्हाट इज ये क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि डीबीएम लाइक डीबीएम क्या है और लाइक एआरटी क्या है, तो फिर उस लाइक उसको वन बाय वन लाइक समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको, जैसा कि मैंने यहाँ पे लाइक राइट किया हुआ है, when we build our app and generate APK, part of that APK और डेक्स फाइल्स। तो जो डेक्स फाइल होती है वो बेसिकली कई सारे डेक्स जो फाइल्स होते हैं, जैसे कि हमारे मैंने बताया था कि अगर 64,000 मेथड्स अगर एक डेक्स फाइल में होते हैं तो फिर वो दूसरा डेक्स फाइल जनरेट होता है। तो वो कई सारे मल्टीपल्स अगर डेक्स फाइल्स होते हैं तो वो एक डेक्स फाइल मिलके हमारी एपीके फाइल्स बनती है। ओके, those files contains a source code of our app including all libraries that we use, and those files are written using low level code designed for a software interpreted the bytecode. Okay, when a user run our app, the bytecode written in .dex file in translated by Android runtime into machine code. A machine code. Machine code means a set of instructions. Okay, that can be directly understood by the machine and processed by the CPU. Android runtime also manage memory and collections. So basically Android runtime ये भी मैनेज करता है, ये प्रोसेसिंग करने के साथ, मतलब CPU प्रोसेसिंग करने के साथ साथ ये लाइक मैनेज करता है मेमोरीज एंड कलेक्शंस को। This compilation of the bytecode into machine code can be done using various strategies, and all those strategies have their trade-off. And to understand how Android runtime works today and why it's done that way, we have to move back in time a couple of year and learn about Dalvik. अब हम यहाँ पे डाल्विक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि पहले डाल्विक के साथ हमारा एंड्रॉयड कैसे वर्क करता। तो डाल्विक बिफोर किटकैट, मतलब डाल्विक किटकैट से पहले कैसे यूज होता था। इन अर्लियर डेज, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि एंड्रॉयड फोन्स वर नॉट पावरफुल एज दे आर नाउ। मोस्ट फोन्स एट a time have very little RAM. No wonder the first Android runtime, known as Dalvik, was implemented to optimize exactly this one parameter, RAM uses. Okay, so instead of compiling the whole app to machine code before running it, it is used to strategies called just-in-time compilation. तो जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस किया है कि लाइक इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग होल ऐप टू मशीन कोड बिफोर रनिंग इट, इट इज यूज द स्ट्रेटजी। वो एक स्ट्रेटजी यूज करता था कंपाइलेशन कंपाइल करने के लिए, उसे हम बोलते थे जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। इसको शॉर्ट में हम जीआईटी बोलते हैं। ओके, इन दिस स्ट्रेटजी द कंपाइलर वर्क ए लिटिल बिट एज एन इंटरप्रेटर। It compiles small chunks of code during the execution of the app, so at runtime. And because Dalvik only compiled the code that it needed, it allowed saving a lot of RAM. Okay, but this strategy has one serious drawback. Because this all happened at runtime, it's obviously had a negative impact on runtime performance. Eventually, some optimization were introduced to Dalvik. Some of the frequently run code was cached to not be recompiled without need. Okay, but it is a
it was all very limited because of how scarce RAM was in those earlier days. And that worked fine for a couple of years, but in time, phones were getting more and more powerful and were getting more RAM. And the fact that apps were also getting bigger caused that the performance impact that Dalvik had at runtime was getting more and more of a problem. That's why in Android L, L means lollipop, the new Android runtime was introduced and it was called Android runtime and इसको हम short में बोलते हैं Android runtime ART. एंड्रॉयड रन टाइम जो है हमारी लॉलीपॉप किटकैट यानी कि लॉलीपॉप और उसके बाद के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये बेसिकली द वे ART वर्क इन एंड्रॉयड लॉलीपॉप वाज ए 180 डिग्री शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट वी नो फ्रॉम द डाल्विक यानी डाल्विक में जो था उससे से उलट पूरा ही उलट हो गया था डिफरेंट हो गया था ART के कॉन्सेप्ट में ART instead of the using just-in-time compilation that it was done in Dalvik user strategies called ahead of time compilation. AOT in shorts. So in ART, instead of interpreting code at runtime, code was compiled before running the app. So when the app was running, machine code was already prepared. This approach used improved runtime performance since running the machine code is about 20 times faster than GIT compilation. But this approach also has some drawbacks. ART in Android Lollipop used a lot more RAM than Dalvik. यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि इसने इस लाइक अप्रोच में बहुत सारे ज्यादा रैम्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था. Another drawback of the AOT is that it took more time to install the app since after downloading the APK, the whole app needed to be transferred to machine code and it's also look longer to perform a system updates because all apps need to be re-optimized. For frequently used method and classes, it obviously pay off to have it all pre-compiled, but the reality is the most part of our app are very rarely used by our so having the whole app pre-compiled almost never pay off. That's why in Android N yani कि Nugget, just in time compilation was introduced back to Android runtime along with sometimes called profile guide compilation. सो हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि दैट्स वाई एंड्रॉयड न यानी नगेट में just in time compilation was introduced back to Android runtime along with something called profile guide compilation. सो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफाइल गाइडेड कंपाइलेशन क्या है. प्रोफाइल गाइडेड compilation is a strategy that allow constantly improving performance of Android app as they run. By default, the app is compiled using in just-in-time compilation, but when ART detects that some methods of hot, which means that they run frequently, ART can pre-compile and cache those methods to achieve the best performance. Other parts of the app stay uncompiled until they are used at use actually used. This strategy allows providing the best possible performance for key parts of the app while reducing the RAM usage. Since as it run out for most apps, only 10 to 20% of code is frequently used. After this change ART, no more impacted to speed app install and system updates. अब यहाँ पे भी थोड़ी सी इशू रह गई थी. ओके उसके बाद उसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं. प्री कंपाइलेशन ऑफ द की पार्ट्स ऑफ एन ऐप happened only while the device was ideal and charging to optimize the impact of the device battery. The weak point of this approach is that in order to get the profile data and to pre-compile frequently used method and classes, user has to actually use the an app. That means that the few first usage of the app can be kind of slow because JIT compilation is used then. Okay, that's why to improve the this initial user experience, Android team introduced in Android P, यानी कि Pi, something new in ART. उन्होंने नया like Android Pi में उन्होंने कुछ और नया इंट्रोड्यूस किया ART में and that things was called profile in the cloud.
अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड होता है एंड्रॉयड 5 में विथ ART। सो हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल इन द क्लाउड। अब ये इस कॉन्सेप्ट में क्या है, द मेन आइडिया बिहाइंड प्रोफाइल इन द क्लाउड इज दैट मोस्ट यूजर use the app in very similar way. So in order to improve performance right after installation, we can collect profile data from profile who already use this app. This aggregate profile data is used to create a file called common core profile for the application. So when a new user install the app, this file downloaded alongside this applications. Okay, ART uses it to pre-compile classes and methods that are frequently run by most of the users. That way, a new user get a better performance right after downloading an app. And it does not mean the old strategy is no longer used. After the user run an app, ART will gather user-specific profile data and recompile code that is frequently used by this particular user when the device is ideal. And the part of all this is that it all happens behind the scene in Android runtime. We developers who are making apps don't have to do anything to enable it. सो ये सारा कॉन्सेप्ट है, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है कि व्हाट इज डीबीएम एंड एआरटी। सो अभी जो हमारा फिलहाल लाइक हमारी डॉट एप्लीकेशन में जो इंटरनली यूज होता है एआरटी, और एआरटी लाइक अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, और उसके साथ हमारी जो मैंने दो चीजें और डिस्कस किया था, वेलो लाइक एंड्रॉयड पाई के बाद स्टार्ट है प्रोफाइल इन द क्लाउड। सो इस बेसिस पे ये हमारी इंटरनल वर्किंग होती है हमारी एआरटी की। और डीबीएम जो कि बहुत पहले ही है और वो अब यूज नहीं होता है हमारे एंड्रॉयड में। सो आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ इंटरव्यूज में बेसिकली क्या पूछा जाता है, अगर एक आप अच्छे लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके लिए फिर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके फिर मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।